Good morning, dear students. Today we are going to continue our chapter number 4 from the diary of Anne Frank. Till last class we have studied about the Anne, who was she and what this chapter is all about, and the first page of the chapter. Now we are going to continue it. At this point of time we have understood that she was moved to Holland from Germany, and because she was very all alone and she did not have anyone to talk about anything, so she made a diary and considered it as her friend, and now she gave that diary a name also. That name is Kitty. So we are going to see the conversation between Anne and her friend Kitty. Kitty is the diary, as we all know. Okay, so now we are going to read the next part or the final part, as you can see. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing. So here Anne writes that plunge, first of all word plunge, plunge means to write quickly. Okay, here this word is used for to write quickly. यहाँ पर एने बोलती है कि अगर मैं तुरंत ही सब कुछ लिखना शुरू कर दूंगी तो जो पढ़ेगा कोई भी अगर, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं और किटी क्या बात कर रहे हैं. तो वो क्या बोलती है कि सबसे पहले मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा स्केच, अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी, लाइफ लाइन बताना चाहती हूँ. और वो ये भी बोलती है कि मुझे ये करना पसंद नहीं, आई डिसलाइक डूइंग सो. शी tells, my father, the most adorable father I have ever seen. I didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. She used to love her father. Her father married his wife when he was 16 and the mother was 25 years old. Her sister was 3 years elder than her and she was born on 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रही. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Sedith Hollander Frank, went him with the Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Then she says that वो जर्मनी में रहते थे. Then her father migrated or moved or shifted to Holland. Holland is the same country as we call it now Netherlands. Netherlands और Holland same country है. उस टाइम उसको Holland बोला जाता था. तो वो Holland में मूव कर जाता है और उनकी मम्मी भी सितंबर में चली जाती है. उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को उनके ग्रैंड मदर के पास रखते हैं बिकॉज सेटलमेंट्स एंड स्टडीज़ एंड ऑल. तो जब वहाँ सेटलमेंट हो जाता है हॉलैंड में, तो उसकी बड़ी बहन जनवरी में जाती है और जो एने होती है वो फरवरी में हॉलैंड जाती है. शी राइट्स दैट आई प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मार्गोट का बर्थडे था फरवरी में, तो एज अ बर्थडे प्रेजेंट और यू कैन से एज अ सरप्राइज her parents brought her to Holland on the birthday of her sister. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो वो अपनी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में बता रही है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. फॉर एग्जांपल उसके मम्मी पापा मूव करते हैं, फिर उसकी बहन मूव करती है, फिर वो अपनी बहन से मिलती है बहुत टाइम के बाद ऑन द डे ऑफ हर बर्थडे. फिर वो नेक्स्ट बताती है कि उसने स्कूल ज्वाइन किया 1st क्लास में और 6th क्लास तक उस स्कूल में पढ़ी. 6th क्लास में उसकी जो टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस ये थी, तो जब वो स्कूल छोड़ रही थी तो वो दोनों बहुत
sad थे because they had a very strong relationship. So it was very important part of her life. So वो अपनी डायरी में इस important part को लिखती है, and this shows that the girl was very attached to people and especially with parents and her teachers also. So she was very friendly and attached kind of person. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with the little celebration. 1941 में उनकी दादी जो है बीमार होती है और ऑपरेशन करवाना होता है. Grandma died in January 1942. एक साल जिंदा रहने के बाद 1942 में उनकी डेथ हो जाती है, ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. नाउ शी सेज जनवरी में उसकी दादी की डेथ होती है और इसका बर्थडे जून में आता है, तो जून में इसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है. बर्थडे सेलिब्रेशन अ काइंड ऑफ मूड फ्रेशनर के लिए होता है और शी यूज टू मिस हर ग्रैंडमा बिकॉज शी स्पेंड हर childhood with her grandmother. So now again it denotes that she was very attached to the people she used to know or love. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो अभी 1942 की बात हो रही है, 20 जून 1942 की बात हो रही है. अब ये लोग 4 लोग हैं, मम्मी पापा और दोनों बहनें. नाउ डियरेस्ट किटी. अब यहाँ से वो अपनी किटी से बात करना शुरू करती है. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up the next form and who will the kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you're going to pass? No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. यहाँ पर अब वो सीधा क्या बताती है, अपने क्लास के बारे में बताती है. रिजल्ट का डे है, रिजल्ट डे है. शी इज़ कॉलिंग इट अ मीटिंग. रिजल्ट का डे है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा. पास होगा वो अगली क्लास में जाएगा, फेल होगा वो उसी क्लास में रह जाएगा. तो वो बताती है कि उस क्लास में सब बच्चे एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे. तो लोग एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे दैट हु विल गेट पास एंड हु विल गेट फेल. सो ये अपनी एक स्टोरी, एक सहेली अपनी एक फ्रेंड की एक स्टोरी बता रही है. CN, GN, हर नेम वॉज GN. GN एंड आई लाफ्ड बिकॉज जो उनके पीछे 2 लड़के बैठे हुए थे, उनका नाम था CN एंड जेकस. वो लोगों ने पूरे गर्मी की छुट्टियों में, अपने पूरे समर वेकेशन में थोड़े थोड़े पैसे जमा करे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बेट लगानी थी on the day of the result. So it was very funny for them. तो वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे. No, I am not. No, I am not. No, I am not. So the NA and her friend were getting annoyed. So they were looking back again and again to make them be quiet, but they were not getting quiet. They were continuously talking about the results. So NA says that 1/4 of the class was going to fail as per her prediction because there were so many people who were not very good at the studies. But she says that teachers are very unpredictable. We can't predict that to whom they will pass, to whom they will fail. I'm not so worried about my girlfriends and myself will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old 4G, who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much for several warnings. He assigned me extra homework and essay on the subject. A chatterbox. A chatterbox? What can you write about that?
I'd worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये बोलती है कि उसको अपने फ्रेंड्स और अपने ऊपर भरोसा था कि वो लोग पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट शी वॉज वरीड अबाउट वॉज मैथ्स. एंड इन नेक्स्ट पैराग्राफ शी सेज कि उसका जो रिलेशनशिप है उसके टीचर्स के साथ हमेशा ही अच्छा रहा है. शी यूज टू लाइक लव हर टीचर्स. नाउ शी इज टेलिंग अबाउट वन टीचर, मिस्टर कीसिंग. मिस्टर कीसिंग वॉज द ओल्ड फौजी. Fauji word is used for old fashioned person. He was an old man, Mr. Kissing. So he used to get very annoyed because the NA used to talk very much in the class. तो एक दिन क्या होता है, वो कुछ पढ़ा रहे थे और एनए जो है वो बात करने लगती है, बोलने लगती है. तो वो गुस्से में आके उसको एक होमवर्क देते हैं, एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि कल तुम चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख के आओगे. चैटर बॉक्स इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु टॉक्स वेरी मच. बिकॉज शी वॉज टॉकिंग, तो उसको चिढ़ाने के लिए, उसको डांटने के लिए, एक सार्केस्टिक वे में उसको कुछ समझाने के लिए उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया चैटर बॉक्स में. तो उसने बस चैटर बॉक्स टाइटल अपनी कॉपी में लिखा और उसने सोचा कि बाद में सोचूंगी कि क्या लिखना है इस बारे में. That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject. While chewing the tip of my fountain pen, anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. फिर वो ये बोलती है कि उस शाम को सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उसने फिर उस टॉपिक के बारे में सोचा, चैटर बॉक्स के बारे में. तो वो ये बोलती है कि कोई और होता तो मे बी he or she would have just wrote anything with big spaces between words just to complete the homework. पर यहाँ पर उसकी एक और क्वालिटी पता चलती है कि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी वॉज वेरी फनी इन हर वे. वो जल्दी से ख़त्म करने के बजाय एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देना चाहती है, अच्छा एक रिप्लाई देना चाहती है टीचर को. तो वो बहुत देर सोचने के बाद ये लिखती है कि बात करना एक स्टूडेंट का कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है. तो मैं कोशिश करूँगी कि इस ट्रेट को जल्दी से छोड़ सकूँ. दैट मीन्स बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है. वो ये बताना चाहती है कि एवरी स्टूडेंट टॉक्स, सम टॉक्स लिटिल, सम टॉक्स वेरी मच. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अब उसके बाद ये बोलती है कि पहले तो उसने बोला कि I will try to handle it, पर फिर वो ये बोलती है कि मेरी मम्मी भी बहुत बात करती है. So now she is giving an argument that because my mother talks very much, that's why I talk very much, and it is inherited. I have this from my parent and I can't control an inherited trait. That means जो अपने मम्मी पापा से मुझे trait मिले हैं, characters मिले हैं, उसको मैं control नहीं कर सकती. It is natural. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि she is trying to be very intelligent and witty and very funny at the same time, and she wrote 3 pages on the topic chatterbox. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. नेक्स्ट डे मिस्टर कीसिंग जो टीचर है पढ़ते हैं और बहुत ज़ोर से हंसते हैं. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, फिर क्या होता है, फिर से वो बात करने लगती है नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में. ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, फिर वो उसको जो टीचर है एन को दूसरा ऐसे देते हैं. नाउ दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन अनइनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरेजिबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, हु इज़ ऑलवेज अनोइंग, और जिसको आप चुप नहीं करा सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते.
I handed it in the Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough, and a frank as punishment for talking in the class. Write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Now, उसको फिर से एक क्लास में डांट पड़ती है तो वो 1-2 क्लास चुप रहती है, फिर तीसरे क्लास से बात करना शुरू करती है, तो फिर उसके टीचर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसको इस बार टॉपिक देते हैं क्वैक क्वैक क्वैक. क्वैक 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 इज द साउंड ऑफ अ डक एज वी ऑल नो. तो क्वैक 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 वो करने लगता है, उसको टॉपिक दे दिया जाता है. द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू. सबको हंसी आ गई क्योंकि वो टॉपिक ही क्वैक क्वैक क्वैक, दिस इज द साउंड ऑफ अ डक. So the teacher was trying to ridicule him. So everybody laughed and Anne laughed too. I'd nearly exhausted my integrity for the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Anne, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in the verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me and this ridiculous subject, but I'd make sure that the joke was on him. Because Anne was very sure that जो उनके टीचर हैं वो बस चिढ़ाना चाहते हैं. चिढ़ाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक सार्कास्टिक वे में उसको डांट रहे थे. तो उसकी फ्रेंड थी एने की, उसका नाम था what was the name, whatever it was, Sene. The name was Sene, sorry for that. The name was Sene. ओके, तो जो सैने थी वो एक अच्छी पोएट थी. तो वो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि वो लोग कुछ लिखेंगे क्वैक 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 के ऊपर. इससे क्या होगा, कुछ लिख लेंगे तो जो जोक टीचर ने किया था वो जोक वापस टीचर के ऊपर आ जाएगा. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke at the right way. He read the poem to the class, adding in his own comment and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned an extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. Now क्या होता है, उन दोनों ने मिलके उस क्वैक 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 टॉपिक के ऊपर एक पूरा का पूरा पोएम लिखा. उस पोएम में एक डक फैमिली के बारे में लिखा. द डक फैमिली में जो फादर है वो अपने डकलिंग्स को मार देता है बिकॉज दे यूज टू क्वैक वेरी मच. सो उनका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और इट वॉज़ वेरी फनी. तो जो टीचर है ही एन्जॉयड दैट टॉपिक and he read that topic in the class and every other class also. It was very enjoyable, and from that class Anne was allowed to talk in the class because she was very witty and intelligent too. So इस वाले पार्ट से हमको ये समझ में आता है, she was very intelligent, she used to love her teacher, respect her teacher, and she was very witty, funny and very good at studies also. तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. यहाँ पर हमको एक ग्लांस मिलता है how Anne was, and it is the part of her diary which was of course very long. So our chapter is completed here. In next chapter, in next class we will talk about something else. Till then, have a nice day, take care of yourself and be at your home always. Thank you for listening to me. Have a nice day. Bye.